Things you should avoid while preparing for NDA 12026, or the things that I did in my previous attempts that did not lead me to the selection. So let's begin with this process. So this is me, Ritika. Hope you all guys are doing fine and really well in their lives. So here I am with my all tricks and all the pointers that you should avoid while preparing for your NDA examination, or things that I should know before my preparation. Not making this video so longer that you also get bored. So here are some cut to cut points that are: number 1, you should rely on the only one resource, और आपको ना बार बार या फिर बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है. यू शुड फील कि आई हैव टू डू ओनली वन रिसोर्स विथ कंप्लीट डेडिकेशन. ठीक है. और नो मल्टीपल रिसोर्स डज नॉट मीन्स दैट यू शुड नॉट डू मल्टीपल रिविजन. दैट आई डिड नॉट से. So here comes the second point, that is you should do multiple revisions but not from multiple books. आपको multiple revision करना है but through the same book that or same resource that you prefer. And in my previous attempts, I made this mistake that I used multiple resources for my preparation, and for this NDA 12026 attempt, I only stuck to one resource, and that is all. And I am getting my scores. Also, I am revising again and again through one resource and doing it multiple times. It will also actually help. The third point is you should do only dedicate last few months for question practice and question practice. This will lead to the accuracy and for the completement, और like आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं अब उन्हें स्ट्रॉन्ग कैसे होएगा? ओनली थ्रू क्वेश्चंस इन GAT एंड ऑल्सो इन मैथ्स. सो हेयर आर द नेक्स्ट few months that you should dedicate for your question practice. ठीक है. अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया है और एंड तक मे बी आप एक गोल सेट कर सकते हो कि टिल द एंड ऑफ जनवरी यू शुड कंप्लीट योर होल सिलेबस. कंप्लीट एनीथिंग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूम कर पाते हो यू शुड. बट आफ्टर जनवरी योर मेन गोल इज़ टू just give mocks and analyze question practice PYQs. That's last but not the least, or also the most important point among the all, that you can't avoid your English and science. You have to prepare it भाई ब्रो. GAT में आपको ये लगा लो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, आपको इसका क्या ही पता है? डू यू एग्री? आपको इसका कुछ नहीं पता, और अगर पता भी होगा तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आने नहीं है इस चीज़ में. और आई पर्सनली बिलीव थ्रू माई प्रीवियस 2 अटैम्प्ट्स दैट आप SST को कितना भी अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाओ बट एट द एंड वहाँ पे जो आएगा वो किसी को नहीं पता. ठीक है. तो बट द ओनली पोर्शन दैट वी नो इज़ साइंस एंड इंग्लिश. सो प्रिपेयर दैट वेल. Also, you can share your reviews of my video, that how much you resonate with all these things that I have been sharing you guys. And yes, I will post continuously after this video and all the updates of my NDA 12026. So if you think that I am doing some mistakes in the whole video, so I'm sorry, and I will definitely improve that. Thank you so much for watching. Bye.